to welcome the Honorable Prime Minister and Sadhguru today to the Save Soil event here in Delhi as part of Sadhguru's lone motorcycle journey across the world for the rallying call of Save Soil. Welcome, Honorable Prime Minister, sir, and Sadhguru. As I mentioned, it is a landmark day in Sadhguru's 100-day, 30,000-kilometer journey for the Conscious Planet Save Soil movement to accelerate citizen support and government action policy to revitalize soil. We have both Sadhguru and the Prime Minister here, and I'd like to request our soil champion, the lone motorcyclist, the one that needs no introduction, Sadhguru, to please share his pearls of wisdom with us. Kala na janati tava jananam. Kala na janati tava samapanam. Drushto maya tava mahakara yogeshwara Kala Kala Yogeshwara Kala Kala. Namaskaram and our heartiest welcome to our beloved Prime Minister. And many other ministers, cabinet ministers and envoys and excellencies. Namaskaram to all of you. And above all, the wonderful volunteers who have supported me every mile. As human beings, we are here on this planet just in terms of planet's life just for a few moments. But still, how empowered we are that we can even threaten the life on this planet. This empowerment is the peak of evolution. This is what we are. We are the flower of evolution. We are the consequence of every other creature that has grown in this land, in this planet. But invested with such a sense of intelligence, with such a sense of capability, if we do not function consciously, if we do not function responsibly, our intelligence and our capabilities turn against us. This is what soil degradation is about. Soil degradation has happened, environmental damage has happened, not because there is some evil force sitting somewhere wanting to damage this planet. It is all in pursuit of human happiness and well-being that this is happening. So this is the case of a potato farmer who wanted to eat mangoes and went to the mango tree, but out of sheer habit started digging the earth looking for mangoes. When he did not find mangoes there, he became very furious and dug furiously, and slowly the tree came upon him. This is the case of humanity right now. This is where we are. So, every one of us, knowingly, unknowingly, are partners in this destruction. The only way around is every one of us have to be partners in the solution. There is simply no other way. It is from this basis that Save Soil movement was launched, and in the last 2.5 years, as I've been talking to various agricultural ministries around the world, what was shocking for me was that most agricultural ministries in the world, 85% of the nation still
address soil as an inert substance that can be fixed by adding a chemical or taking out a chemical. But in this culture, we have always referred to soil as our mother. We cannot have an inert mother, we cannot have a dead mother. We need a living mother which will spawn generation after generation. It is not out of our bodies the future generations come. It is from the soil body that the future generations come and thrive. Unfortunately, we have brought that to a certain threat, but fortunately, we are in that cusp of time that if we act now in a determined way, it does not take any rocket science to fix this, nor does it take enormous amount of financial outlays. It just needs the right direction and a committed and approach, a resolute approach towards the solution. We can walk out of it, especially in our country, where 60% of our population still engaged in agricultural activity. And with a history of over 12,000 years of agricultural history in this country, where organized agriculture has been happening for over 12,000 years. But for 12,000 years, we managed our soils well. Only in the last 45 years this has happened, simply because probably the fear of famines of 1940s, the hangover of the 1940s debilitating famines, we took emergency steps to mitigate that. Well, it worked in many ways, because India's average life expectancy in 1947 was 28 years. That means almost none of us have a right to exist right now by those standards. But today we have reached towards 74 or 75 years, which is a significant achievement for any nation. We have gotten here, but the steps that we took as a bridge, as an emergency step to cross over these famine-like situations, we should have rolled it back at some point. Unfortunately, we went at the same speed on the emergency scale and we have caused a certain amount of damage. It's very much possible to turn this around. And from my conversations with the Prime Minister, we know this concern is deep-rooted in his heart. It is just that we have to, as citizens of this nation, it is important you stand up and support a possibility, because these are steps which will take 10, 15, 20 years maybe to turn around fully. So when a government has to take long-term steps like this, without the support of the democratic citizens, there is no way no nation can take such steps, because government's terms are usually 5 years in this country. So 5-year term and 20-year policy is a little bit of a difficulty for various reasons. So it is very important people stand up and support this. This is not a protest, this is not an agitation, this is not an expression of anger or resentment. This is an expression of our love and responsibility for the life that we are, and the life that's around us, and the life that should be beyond us. This is very, very important. Right now, what we are threatening is the future generations. Every responsible scientist in the world is pointing out, in about 60 years' time, 90% of the world's soil will be degraded. And that is not a welcome prediction. Definitely this can be turned around with the necessary policies, and it does not need enormous outlays. It needs focus, it needs resolute action, which I'm sure in this day and age, India is very much capable under the able leadership that we have, that we are competent enough to take these steps. So it is not a situation of hopelessness. It is a situation where all of us have to tighten our belt and act and move in the direction of the solution rather than moving towards a problem. Apart from this, in the world, what I have seen is, wherever I traveled in the last 2.5, 3 years' time, meeting many people, environmental ministers, agriculture ministers and various bureaucrats, everybody knows the problem. Everybody generally knows what is the solution. So what I grasped from this was, everybody knows the problem, everybody knows the solution, but they're just waiting for an idiot to bell the cat. So here I am, I thought. Because the problem is known to everybody in the world, all UN agencies are very conversant with the problem, most nations are very conversant with the problem, but somehow there was a silence.
Fortunately, in the last 75 days, it is India 75, it's my great privilege in 75 days I'm in New Delhi. In the last 75 days, 74 nations have come on board for safe soil policy. 2.4 billion people have expressed their concern for soil, which has been never before. So once people want it, how can we stop it? Definitely it will happen. The most important aspect of this Save Soil movement is, it is not against anybody. It is not against any industry, it is not against any lobby, it is not against anybody. I've been talking to fertilizer industries, pesticides, herbicides. They're saying, are you against us? I say, I'm only against suicide. I'm not against any other side. It is not anybody's business to tell the farmer how he should farm. All we want is keep the soil alive, keep the soil rich. Is a farmer against a rich soil? No. Just that farmer's economy has been so fragile, any change he's afraid of. If an incentive-based policy is pushed, definitely most farmers will respond in a very, very positive way. We are very sure about this because we have spoken extensively to farming community around the world, and we find everybody is absolutely positive about this. It is just that they need incentive support, which doesn't cost much in this country. Just something as simple as bringing cover crops, which were very much a part of our culture just 45 to 50 years ago. Just bringing cover crops will make the organic content in the soil go up to 3% within 6 to 8 years' time. Only cover crops in summer can do that because it will add 1.5 to 2 inches of humus every year, and it will solve this problem. This is a very simple approach. If we want to do it more aggressively, then it may cost more money. But to do it in the simplest possible way is cover crop. Why I'm saying cover crop is, right now it's the month of May. If you fly across India, you will see, except Western Ghats and northeastern part of India, largely it looks like a brown desert. This is not how India should look. Whatever the season, there must be green leaf on the land, and this was the way India's farming used to be. This is the way the wisdom of the farming community used to work, but unfortunately, we have dropped these things for whatever reasons. Instead of looking for who is to be blamed, instead of looking for what is the problem, who caused the problem, all of us are the problem, and all of us should become the solution. Thank you very much. Once again, thank you, sir, for being here. If I can say one, as the Prime Minister has taken up the Solar Alliance, I think there's an immense opportunity. After talking to various leaders around the world, I realize India and the Prime Minister of India could take up the leadership of soil regeneration in India and the world. The global leadership for soil regeneration, starting with G20, considering we are going to have the stewardship of G20 in the coming year. Thank you very much. Thank you, Sadhguru, for your enlightening words. And as mentioned by him, the Save Soil movement has already touched 2.5 billion people, and 74 countries have agreed to act to save soil. This is a movement that has united the world, a mission that has brought people together across the globe to commonly address, because it concerns each of us, everyone on earth. His message is simple. Saving soil is necessary to maintain life on our planet. As occupants of a shared planet, we have the unique opportunity now to be part of the solutions for crises like soil extinction and desertification. Here's presenting to you a video that explains the science behind the Save Soil campaign. What we are facing now is soil extinction. In most countries, more than 50% of the topsoil is already gone.
Every responsible scientist in the world is clearly saying by 2045, we will be producing 40% less food. 300,000 farmers committed suicide. What else does it take to stir your humanity? UNFAO is saying the food that we are eating belongs to the unborn child. Eating away the food of that life is the worst possible way to live, isn't it? It is agreed by all scientific communities, minimum 3% organic content is essential to keep the organisms fed in the soil. So this is what we must aim at, an incentive-based policy where if you get the land to 3% organic content, you will get a certain amount of incentive. Ladies and gentlemen, as I mentioned earlier, several years ago, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, had launched a nationwide scheme to help farmers to prevent soil deterioration through balanced use of fertilizers and the application of the right nutrients. The Honorable Prime Minister's foresight, vision, and commitment to the global efforts to restore and rejuvenate our planet and soil in particular from extinction is exceptional. I'd like to request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to please address the gathering. नमस्कार। आप सभी को, पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहाँ पहुँची है। आज जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा
कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष आधे टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां आधे टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने ये भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सदगुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में एक पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था। गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद। कहीं रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था। सब कहते थे देखिए किसने पत्थर रखा, कहाँ से पत्थर आया है, दे समझते नहीं वगैरह। लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को मनुष्य को हेल्थ कार्ड दें ना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है, लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, तो उत्पाद भी बढ़ रहा है। मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% नीम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, अब मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक चम्मच थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार, 5 बार, 7 बार, एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डुबो देने से फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है। बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है, और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर
20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। साथियों, देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने, ईंधन में आत्मनिर्भरता, किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वाद के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है। और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है। वो परेशान हो जाएंगे। इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं तो वहां एक गोवर्धन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगा है, जरूर देख के आइए। इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है। मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सके, इसके लिए बीते 7-8 सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है। हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस, प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है।
आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं। वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। साथियों, देश आज जिस पीएम नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है, वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गति शक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, 100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स।
भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब के अवसर भी बना रहे हैं। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस एनसीसी को जोड़िए। आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से संपूर्णता की अप्रोच से ही संभव है। इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है, हमें कैसे उसे बदलना है, इसे लेकर मैं आज शाम को एक कार्यक्रम में बात करने वाला हूं, विस्तार से कहने वाला हूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरा कार्यक्रम है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मिशन लाइफ। इस शताब्दी की तस्वीर, इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ। ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा। आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए, वरना हम एसी भी चलाएंगे और रजाई भी ओढ़ेंगे और फिर पर्यावरण के सेमिनार में बढ़िया भाषण भी देंगे। साथियों, आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको सिद्धि मिले। सदगुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है, बाइक पे, वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये, लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है। क्योंकि मैं कभी यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता रहता था और मैं कहता था मेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब 5-10 साल उम्र कम कर देना, इतनी मेहनत पड़ती है। सदगुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
Just one. Thank you, Prime Minister, sir. Thank you, Prime Minister, sir, for your words of wholehearted support, encouragement, and guidance. As we conclude, may I request Sadhguru to please give thanks. Well, because the Prime Minister is on stage, I've been trying to deliver a serious talk, but he's stealing the stage with all his humor. So, whether we want to ensure food security for the nation, enhance farmers' income, enhance biodiversity, bring back aliveness into our soil, safe soil is very important. We beseech the Prime Minister to take dynamic steps in this direction. He's already narrated many things. We are willing to work with the required ministries to take this ahead. Thank you very much, sir, for being here today. Thank you, Sadhguru and Prime Minister, sir, for your vision and foresight. Please remain in your places, ladies and gentlemen, as the Prime Minister and Sadhguru leave the hall. Please be seated. Thank you, Sadhguru, and we wish you a safe journey as you continue to travel in the last leg of the 100-day journey through Bharat, onward as you go to Lucknow, Bhopal, Nasik, Mumbai, Hyderabad, Mysuru, Bengaluru, and to the Kaveri Basin in Coimbatore, and conclude at the Adi Yogi at Isha Yoga Center. Thank you, Sadhguru, for single-handedly taking on the mammoth mission of Save Soil. Please remain with us as we share with you glimpses of Sadhguru's Save Soil rally across 27 countries, from London to New Delhi so far. We would like to also invite you to join us for this evening's public event being held at the Indira Gandhi Indoor Stadium from 6 p.m. to 8 p.m. Entry, as you know, is restricted to those who have registered on the website for the event, and we do have a few seats left still in case you want to join us. Please register on the Conscious Planet website at savesoil.co/Delhi. Please enjoy the Save Soil rally video that we have for you. Please be seated, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this fast. This memorandum of understanding that we signed, it will also bring some technical assistance to the Caribbean region. This is a historic moment because here is the first step to turn around. What you're doing today is really important because people like you who have a wonderful following of millions and millions of people, and what you're doing with that is so important with saving the soil. If you want to say, I love you to your child, you must just say save soil, because it is a more committed way of saying I love you. It's an extraordinary campaign. It echoes what we in the Commonwealth have been aspiring to do for a number of years. Next 100 days from 21st of March, we want the whole world to talk about soil. It is not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? Nobody spoke about soil like Sadhguru does. I think if we all contribute, then we have a really strong voice. There has been so much excitement and everybody is so excited to hear Sadhguru.
our time on the planet. What we do here is our business. Let's do the right things. I honestly didn't feel a part of the movement before, obviously. I'd never met him. Seeing what kind of a following he has and how impactful it is, I really feel like I just joined a global movement. Graffiti artists supporting this Save Soil movement, wanting to inspire the youth, and youth being the major population in most parts of the world today, all graffiti artists, to whatever walls that you have, make sure that you use this. One of the most beautiful cities of Europe. It really resonated with me, the message that we have to save our soil. It's our common issue together. It's not for one nation, for one person, but we as people have to unite and to solve this. This is a celebration of human beings coming together to do what they need to do. All of us have been part of this destruction. The only way is all of us become part of the solution also. Riding on to Italy. Italy is raining heavily tonight. Here in Venice. It's like a wave of hope. It's necessary for the future. Over 2000 years ago, this eternal city made the mistake of over-farming the region, and that was also the fall of the city at that time. So, the Romans of today should never make that mistake once again. And we are very happy that we are aligned in our message to really high the profile of soils. Young people getting into farming is very good. That's the future of the world. Thank you. Here we are in Geneva. I think it's a message of urgency, but it's also a message of hope. So I would really like to thank Sadhguru for his leadership. The global movement led by him addresses the soil crisis by mobilizing people around the entire world. This massive fountain in the Lake of Geneva is lit up for Save Soil today. With Save Soil colors of blue and green, you cannot stop this. The moment is on. It's going to be on till the policies are done. In this cold, slippery road and winds are picking up speed, no matter what the hell, I have to keep going. You think this is a problem? Relentless commitment to what you do. That is the only solution. Save soil, let's make it happen. An MOU to be signed between Isha Foundation and 4 per 1,000 initiative Soils for Food Security and Climate. We were just sharing exactly the same objective, increasing carbon content in the soil. Sadhguru, what you are doing is really impressive. I'm quite amazed and thrilled by it. I was very honored to be on the stage and be able to actually express that his mission is what we need. It's fantastic. France has been great. Well, Brussels. We should all stand up and make the most impact we can to create real change in the world. Save the soil. Get the bottom! A smashing evening at the main event. And a super enthusiastic crowd committing themselves to make this happen. It's heartwarming to see everybody come together. Save soil on the move. Let's make it happen.
Just look up the news and see in the last 4 months, how many governments have started talking about soil because they see it's picking up momentum. But if you create 3 to 4 billion people talking about soil, that's it. That will be the main conversation in the government. Save the Soil is a very important movement that we support as UNCCD. We would like to propose to the world to do whatever they can to protect the soil, because it is our future. Save soil, let's make it happen. I need someone to show me the way. I need someone to show me the way. The education ministry in Germany has now come into the picture officially and asked all the children to do artwork to support Save Soil movement. Good, Arjun, wonderful. Congratulations that you wrote to the Prime Minister. Let's make it happen! So, on the way to Bratislava, well, the road surface is not great. It's great that all of you are here in Bratislava. Nobody ever imagined 100 years ago that we will have to save soil of all the things. Would you like to come in the kitchen and cook with me a little bit? Why not? Without soil being rich, food won't be rich. Without food being rich, our bodies will not be of full potential. What do you call it? It's a Sadhguru sir. Table 12. The old heroes always built something which stands up like this, but the new heroes are those people who will nurture the soil which always lies beneath our feet, never stands up. Oh, this wonderful city of Belgrade, the UNFAO said something which really deeply hurt me, is the soil that we are consuming right now belongs not even to these little children, belongs to the unborn child. This is an expression of our love and responsibility for our own lives and the future lives. I love the message that he sent and how he broadened it, that it's everybody's responsibility. I think there is a great potential for a good collaboration, partnership with the campaign Save Soil, and what we are doing as a government. We can make it together. It's very important, bringing a certain sense of love and celebration towards the land that we walk upon. Going from Sofia to Bucharest, not a weather for motorcycle for sure. Organize yourselves whichever way you want, form groups, come together somehow and see this happens. This is not for us, this is for him and his generation, hoping that they would have a better future with a better world. Save soil. Here in Palestine, wonderful to be here. I salute you and I respect your initiative and my full support of what is needed from the Palestinian side to support you. The most important thing is we must keep our lands alive for future generations, because that is a fundamental responsibility we hold for our children and future generations beyond them.
as a motorcycle driver, I also like motorcycles, and it's not easy. This guy is devoted, and this is what makes him so impressive. Welcome you. Implementation has to happen on the land, and land is not managed by scientists, land is managed by farmers. So it's extremely important. It must be a single point agenda, incentive-based agenda. If inspiration, incentives and disincentives after a certain period of time is the way forward, this is my appeal to every one of you, because I don't want this COP15 to end as one more convention with more paper and more paper. This must end with concrete action, and action in such a way that it's implementable. There is no word to describe what Sadhguru is doing for us. We know how much, you had to do to get here. You left so many things you were doing with it, but you honored the country, you honored the people of this country. And on behalf of the head of state, it's my pleasure. I want to thank you very much. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. Safe soil. Let's make it happen. Saudi Arabia as a kingdom, since 1970s, converting deserts into fertile lands has been quietly happening. Other countries which have fertile lands and actively working to turn them into deserts, you must put them to shame, it's very important. In so many ways we found the differences between each other in terms of nationality, race, religion, caste, creed. If we act as one humanity, in the next 10-15 years we can turn this around. We have already loved you a lot. We even loved you even before seeing you. And when we saw you, we even fell in love even more. بالعربي أنقذ التربة لنفعل ذلك على أرض الواقع بمبادرات عملية وجادة ملموسة الأثر. أنقذ التربة سيف سول. We are very glad to have Sadhguru in the Kingdom of Bahrain. You are capable of looking beyond your immediate well-being and doing something in the world that is worthwhile. Right now, this is not even about generosity, this is about survival. It's an honor to have you here in this location, in the heart of Bahrain, in this ancient harbor. We're very proud that you're here today, discovering the layers of history in this beautiful place. The most important thing of what I have learned from him is that the most important thing is to live in harmony and peace within yourself. انخذوا التربة and save soil. 40 minutes past midnight, just another maybe 30 kilometers to the Emirates border, UAE border. It's been a long drive. Totally 930 kilometers today we're doing. Well, UAE has become, an airline hub and a shopping hub and other kinds, but nobody imagined it could be an ecological hub. Thank you so much for being here with us, Sadhguru, on this wonderful journey. The UAE is partnering with you on Safe Soil, such an important cause. Safe Soil is surely a cause that we can all fully endorse. My dear brother Sadhguru, I would like to thank you for including the United Arab Emirates in your inspiring journey. I'm proud to share that the UAE is working hard to include soil management
and national strategies and policies. Saving the soil is one of the most important things on the planet right now. It's not his mission, it needs to become all of our missions. I'm here to save soil. I had a meeting with Sadhguru ji somewhere in December, I believe. And the net outcome of that whole thing is that I have earmarked funds to make good of the eco deficit of that particular year. Economy should also grow, but it should have an ecological responsibility in its growth. Right now everybody is talking about robotics. It's time robotics goes into agriculture. Right now you have a big machine which just rips the soil off. This, if you leave the robotic machines through the day and night where just as much as needed they can do. They don't have to rip the whole soil. Yes, science is already there, we know what to do. It is just that industry has not caught up because in the policy those things have not come. I didn't imagine that we could find a lot of Omani people joining the movement. I said, Oman, one more desert I have to ride. They said, no, Sadhguru, Oman looks like Kerala. If one part of your nation is green, it just takes a determined effort to stretch that green all the way up. There are no words to describe what it means to be back in India. 70 days we've been on the road, 74 nations have signed up. It's a very proud moment to have amidst us the savior of the soil. It's my fortune that the first step that I take in the sacred land of birth is in Jamnagar. માટી અને પશુ એટલે કે બીજા જીવ મનુષ્ય સિવાયના જીવ એ બંનેની જાળવણી જો કરીશું તો જ મનુષ્ય બચી શકાય એવું છે. લીડ લઈશું ગુજરાત, તમને એટલું કહી શકાય કે લીડ લઈને ગુજરાત આની મેં જેટલું બને એટલું ઝડપથી You are in Gujarat since 2 days. हमारा गुजरात कैसा लगा आपको? People are cool, but the weather is hot. Will you promise me in the next
100 years' time, we'll make the weather also cool for future generations. I was really happy to interact with Sadhguruji. It really inspired me to work more and more towards this country, this nation, this soil. It's my fortune that on this day, when it's Rana Pratapji's Jayanti, I happen to be here. I think is an exceptional movement, and I think now it is our responsibility to make sure that we spread that message, pass on that message, and actually do something about it on the ground. Save soil we must for unity, okay? और पूरी दुनिया में एक नया संदेश देने के लिए सदगुरु जी ने जो ये महाअभियान चलाया है, आने वाले समय में हमारी नौजवान पीढ़ियां आपके इस बताए मार्गदर्शन में चलते हुए मिट्टी बचाने के अभियान को आगे बढ़ाएगी। क्या आपकी आवाज और आशीर्वाद मेरे साथ है क्या?